Assalamualaikum everyone. I am Dr Madiha, consultant cardiologist working as a registrar cardiology in Pharma Memorial Hospital, Lahore. First of all, I will welcome you all to the CME candidate Auscultation versus first talk, named as Easy to Know by Cardiology Department, SMH. So, today's agenda would be we will discuss about normal heart sounds and rhythm murmurs, congenital heart diseases, prophylactic valve and other murmurs, the rest of murmurs on murmurs, working of murmurs, tips and tricks, short cases examination, and hands-on practice. So, before starting my presentation, first of all, I want you people to tell me about the instruments you all are carrying around your neck. Stethoscope. What is the color of this instrument? This is used for oscillation. Oscillation of what? Recording oscillation. GI oscillation, breath sound. So, many things can be like low frequency to that oscillation. So, we should know the basic parts of this instrument. As you can see, it is having ESC. So, we have ear पे लगाते हो, then there is tubing. इसके बाद जो हमारा चेस्ट की कहता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक छोटे वाला जो वेल कहते हैं and the other one is the diaphragm. जो वेल है उससे आप लोकेट मर्मर लीजिए हो and the diaphragm is used for the high pitch murmur. मैंने देखा होगा कि अक्सर की बेसिंग होती तो उसके अंदर भी आप बेल का मर्मर निकाल सकते हो. या आप टेस्ट को अगर ब्रेक से प्रेस करोगे वो हाई फ्रीक्वेंसी मर्मर्स को सुनेगा और अगर टेस्ट वाले के साथ नॉर्मली कनेक्ट करोगे तो वो आपका लो पिच मर्मर को सुनाएगा. ठीक है. अब हम यहाँ से कॉर्डियल ऑस्कुलेशन की बात करेंगे. बिफोर ऑस्कुलेशन मुझे हमारे एरिया का ऑस्कुलेशन क्या-क्या है while doing कॉर्डियल ऑस्कुलेशन. So first of all, tell me about how many valves we have. One more thing. No. So valvular heart disease में क्या क्या आता है? कोई भी खर्चा करना है इसकी नोटिस हो सकता है तो अगर हमें किसी बात को ऑस्कुलेट करने से पहले हमें उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए. हमें अपनी चेस्ट का डायग्राम चला कर रखना है तो जानने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एरिया. जब भी आपको ऑस्कुलेशन की कमांड मिलेगी तो आपको सबसे पहले सैचुरेशन होगी. अगर लेकर क्या हैंडल करना है एलएसटी because LST is the area जहाँ पे हमारा माइक्रो valve होता है और that is the micro area. Right? Next comes the tricuspid area, जो कि left external border fourth stage में होता है. Then pulmonary area, जो second border है, left external border. Aortic area है, aortic area. Second border is right external border and A2 area. A2 area कौन सा होता है? A2 एरिया को अर्थ पॉइंट की कहते हैं और ये होता है पल्मोनरी ट्राइकुस्पिड के नाम में लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में थर्ड ट्राइकुस्पिड. ठीक है. अच्छा. आफ्टर knowing about the areas of osculation हमें क्या करना होता है? जब आप कर सकते हो तो पहले आप जो लव sounds these are the normal heart sounds. ठीक है. लव का एक लेना टर्मिनोलॉजी होगी. वैसे हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्ट हम लोग के एंड सेकंड हार्ट
Suppose I F1 not ability and that is louder, that brings what voices. That either it is microphonic or when it is idea, yeah, it is improved. Or if S1 is short, then it would be any circle analysis or class that would be microphonic. Then comes S2. S2 के दो कंपोनेंट्स होते हैं A2 and T2. A2 was the closure of vertical and T2 is due to layer of conformal. So जब आप S2 को एक्टिवेट करते हो तो दूसरी फोकस on T2. And when T2 is louder than normal, so what will be differential? Pulmonary hypertension. Okay, और अगर T2 आपकी soft है तो किस कंडीशन में होती है? Valvular disease of pulmonary valve. That is pulmonary